नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कॉमिक्स एनिमल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय कॉमिक्स उद्योग के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार एडिसन जॉर्ज ए से। इन्हें आप और मैं मनु नाम से भी बेहतर तरीके से जानते हैं। और जब ये नाम हमारे सामने आया तो डोगा से जुड़ी हुई हमारी स्मृतियाँ एकदम ताज़ा हो जाती हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डोगा किरदार को इतना बेहतर बनाया कि उसने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। तो चलिए आज हम इनसे बात करेंगे। इनकी जो रचनात्मक यात्रा रही है अभी तक, इंडस्ट्री के ऊपर भी कुछ सवालात होंगे, मोस्टली इनके ज़िंदगी से जुड़े हुए और इनके अब तक के सफ़र तक। चलिए आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले अ बिग थैंक यू टू यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। वेलकम। मतलब कॉमिक्स एनिमल गदगद हो गया। अच्छा, मजा आ गया। बहुत अच्छी बात है। राइट सर, शुरुआत करते हैं आज के इंटरव्यू की। और सबसे पहला सवाल जो मेरे जैसे हजारों लाखों फैंस के मन में रहता है, अबाउट दिस quiet and mysterious Manu sir. You have always stayed away from limelight. True. So there are perceptions building up. किसी को लगता होगा शायद आप अलूफ रहना पसंद करते हैं, किसी को लगता होगा मे बी आर्टिस्ट हो तो एक अलग उनको ऐसा होना चाहिए और लाजमी है कि वो एकाकीपन पसंद करते हैं, अकेले में काम करना पसंद करते हैं। एज अ फैन हमें तो बहुत दुख हुआ जब आप एकदम से सीन चले गए। इनविजिबल रहते हैं आप। सो एक कॉमिक फैन के लिए अगर आपके बारे में कुछ जानना हो, हम गूगल करते हैं तो हमें आपके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मिलती नहीं है। और क्या रीज़न है इसके पीछे, सर बताइए आप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा कोई डेलिबरेट रीज़न नहीं है। मतलब डेलिबरेटली आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड माई सेल्फ और कीप अलूफ फ्रॉम अदर्स। इट्स नॉट अ डेलिबरेट एफर्ट। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। इतना है कि बट आई कंसिडर माई मेंटल peace of mind most, so I just cannot compromise on that. Okay. That is the best thing. That is the one of the most important thing in my life. So I cannot compromise on that. So that is the sole reason why I'm absent from the social media or visibility. You're socially also not that much active. हाँ, क्योंकि मैं अपना energy, time कुछ ऐसी चीज़ों पर वेस्ट नहीं करना चाहता जो doesn't make any sense in my work or thought. Got it. That is the reason. Okay. Otherwise, no reason to keep myself aloof. हाँ. सर, एटलीस्ट एक बात तो क्लियर होगी कि आप मिथ नहीं है। You exist for sure. For real. जी हाँ जी। Okay sir, so we'll talk about your roots now. आप केरला से आते हैं, ठीक है? और कैसे आपका मतलब at what stage of your life in your early years आपका रुझान आर्ट की तरफ हुआ, या आपको लगा कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है? कुछ बताइए शुरुआती दिनों के बारे में। ऐसा एक स्टार्टिंग पॉइंट आई कैन नॉट पिन पॉइंट, क्योंकि जो टैलेंट है, ड्रॉ करने की टैलेंट है, जो द स्किल और द टैलेंट इन मी वाज देयर सिंस माय चाइल्डहुड. Okay, so I don't remember any particular date or time on which I have started this thing. Okay, it was always there. Okay. So as I grew up, my passion to draw human beings in action was there always. Okay. Human behavior, different circumstances, different ambience. Okay, so that is perhaps the main reason why I have moved on to comic, because I felt that comics gives you a great platform to explore yourself in these things. So बस यही वजह है। मैं ये नहीं कह सकता कि कभी मैंने किसी पॉइंट पे मैंने शुरू किया हो, तो वो टैलेंट तो पहले से ही था। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स को ड्रॉ करना मेरा पैशन है हमेशा। बहुत ज्यादा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एवरी टाइम मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा मीडियम comics. But why comics only? Because you are telling a story and you have the opportunity, you have the space to show all those emotions of human beings. Okay, and you have the liberty to experiment with situations. Experiment everything. You have everything to draw there, na? So that is why comics. I never wanted to limit myself in any particular frame. See, you have a whole lot of space in comics. Okay, when you're traveling with a story, a script, you get a lot of experience there. See, that's the reason.
बट आपको स्कूल लाइफ में आपको कुछ ऐसा याद है कि यूजुअली होता क्या है, कोई किड आर्ट में अच्छा होता है एंड सडनली अ टीचर स्पॉट्स द टैलेंट और कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हैं और मे बी ताकि वो उस बंदे को थोड़ा सा स्पार्क नोटिस करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं तो उसको और मोटिवेशन मिलता है उसको परस्यू करने का। ऐसा कुछ हुआ कभी आपके साथ? मोटिवेशन तो वो सेल्फ मोटिवेशन है, क्योंकि कोई भी बाहर से मुझे मोटिवेट करके इसमें नहीं लाया। ओके इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज गॉड गिफ्टेड। ओके, तो वो ऑलवेज देयर। जब भी मोटिवेशन चाहिए होता है, आई मोटिवेट माई सेल्फ। आई डोंट डिपेंड ऑन एनी आउटसाइड मोटिवेशन। आई डोंट नीड दैट। बाय गॉड्स ग्रेस, सब कुछ बाय गॉड्स ग्रेस। तो इसलिए क्योंकि वो किसी ने फाइंड आउट किया और पॉइंट आउट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा फ्रॉम चाइल्डहुड ये टैलेंट है मेरे अंदर, तो वो ग्रेजुअली अपने आप ही डेवलप होता जा रहा है। But for a child to be this determined, hats off to you, sir. हाँ, आजकल तो बच्चे 20-25 साल तक भी क्लियर नहीं होते हैं क्या करना है। नहीं धीरेन्द्र, वो जो डिटर्मिनेशन वाली बात ना, वो तब आया जब मैं कॉन्शियसली इन चीज़ों को एनालाइज करने लगा। ओके, डिटर्मिनेशन, द टर्म डिटर्मिनेशन कम्स ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Okay. Before that, there is nothing like determination. It's a gradual and natural process. I'm just evolving myself because I'm always observing things around me and I want to express it on the paper I'm drawing. Okay, that's how it is. Lovely. Sir, please take us through your early years, where you were born and where you were brought up, and how and when you moved to Delhi for career related stuff. Okay, I was born in Madhya Pradesh. And then my parents moved to Delhi. Okay. I have been in Delhi for more than 25 years. Okay. I did my academics there. After that, my career also started there. And at what age you started trying out your luck in comics industry? On comics. First, I never started as a comic artist. Okay. I just went out as an artist, illustrator. Okay, I joined an art studio in Saakshatkar in Delhi. I worked as an assistant to artist. Okay. There I used to paint pictures of birds, different types of birds, and silk piece. Okay. Then I used to draw historical monuments as well. Okay, these were the things I did in the beginning stage. Later on, meanwhile I was doing those things, I had generated a thought for comics. That's how comics came into frame. Okay. That's how I started working on comics and tried my luck. First at Goa Comics. That is in Chowdhury Bazaar in Delhi. Yeah. Okay. तो उनके पास मैंने क्या कहते हैं कुछ साल काम किए, कुछ टाइटल्स मैंने किए उनके, बहुत सारे टाइटल्स किए. So this was roughly in the late 80s? Yeah, 86, 87? Yeah, okay. Late 80s. I think around 87 or so. Okay. Probably. तो कोयल के साथ काम करते हुए फिर 2-3 टाइटल्स मैंने पवन के लिए भी किया. Okay. तो फिर मैंने सोचा should try my luck with Raj because they were the toppest, biggest of that time. Biggest publishers at that time. So I thought of joining Raj Comics. I was not sure that I'd be given entry into the Raj Comics because all those biggies are there already with the Raj. So I was too young to be so confident, 100% confident. So still I thought of trying my luck there and met Mr. Rajkumar Gupta ji. Okay. Yeah. So he asked me to draw pose on Nagraj. Okay. See, I did it very well, and he was so impressed that he sent me to Sanjay ji. Sanjay ji gave me the first script for Parmanu comic. Okay. ठीक है. So the name was Underworld, I think. So that's how I started my journey. Okay. With Raj. Lovely. Yeah. Any formal education that you undertook? No, not at all. Nothing at all. This is sheer. So after school, you graduated in in Delhi. In what subject, if I may ask? That was general. I mean. BA course. BA course, okay. But no formal education in fine arts. Okay, no. Okay, great. Okay. So this was the time when you joined Raj Comics, and I guess 92, 93 was the time when
Doga came into our lives. Yeah, right. And, I think in the year 1990, Doga came into existence. Yeah. And you were the man behind it. So please tell us, I mean, how did the script come to you, and what were your initial thoughts about this character? Because this character was a revolution. Yeah. Because the story was there, the storyline, the character design was already there with the writer. Okay. And Sanjay ji gave me a reference of Deathstroke. Okay. Shown me. Okay. And told me that our character should somewhat look like this. I mean, not exactly, but okay. Inspired, somewhat inspired. You can get inspired by this image. Okay. Based on that, but since this character had a dog background, okay, something has to. This Doga character has some relation with dogs. So definitely his mask should be a dog. Yeah. Mask. Okay. That's how Doga came. So how difficult was it for you to finalize the mask? Because one thing that mask does is it hides your emotions, and what you have done wonderfully well in all these years is to project or to draw Doga in such a manner that in intense situations the expressions would come out very clearly, even behind the mask, even from behind the mask. I think that part, your imagination plays a lot in that, because you need to manipulate the mask yourself. There is a limit to it for the movement aspect, but still you should be able to do that. That's your artistic and your imagination part. And how did the success feel like to you when Doga met with such immediate success, and people just lapped onto this character? They loved reading on and on about it, and you came up with one successful title after the other. How was the feeling? Honestly saying, I never thought of that aspect, that side of how people are taking it. I'm always happy that the character is developing itself, and I'm able to do that. Okay, that's what made me happy always, that the character is evolving itself with my hand. So that's the plus point. I'm not concerned about but I know that ultimately the reader would definitely appreciate it, because I knew it. But the thing is, the character is evolving and it is getting established with the reader. So that's what matters to me. So, as a fan, I must thank you. During your time with Raj Comics, you drew some magnificent, characters: Parmanu, Yodha, Doga, of course, and we loved all of them. One thing that stayed with us all these years. One fine day, all us Doga fans wake up to the reality that Manu sir is not around. He has vanished like anything. Okay. What happened in there, sir? Please tell us. See, I've been with this Doga character for, I think, 18 years. Okay, 18 years. That's a long journey. And then I thought of doing something out of the domestic circle. I mean, try out something international. That's how I left Raj Comics and started for something international. Okay. Yeah. Okay. So, did you meet with mixed reactions back then? I know that you wanted to, grow out of it and, take up other projects and move on to do bigger things. But was there an iota of doubt or regret that you would be stop making this character anymore? Back then? I never thought of that. You never thought of that? Never thought of that. Because I'm not that concerned about it. Because I always concentrate on what I am doing and what should come out of me. Okay, so I'm so confident that whenever I come to a particular scene, well, I should not be kept as a secondary choice. So that's my thought process. So I'm always confident. But lovely to hear from you that you were. It's very difficult to remain detached from your character, which became so popular, and then at the top of its popularity, you decided to move beyond that, and that too without any regrets and all. But I mean, whatever works fine for you. So after that period, when you moved on from Raj Comics,
let us know which other publishing houses you collaborated with or worked for. Moving out of Raj Comics, I joined a company named Q2A. Q2A. Q2A Solutions. Okay. And that was in Okla, Delhi. Okay. Okay. There I worked for 3.5 years as an art director. Meanwhile, I started my chances with the international comics as well. Okay. So I got an opportunity to work for Avatar Press. There I did, I think, 2 or 3 titles for them, for Avatar Press. Then I got a chance to work for 2080. 2080, that is in UK. Okay. It's a UK-based publication. Okay. All right. Yeah. I did a mini-series for them. After that, I joined Virgin Comics in 2007. Okay. Yeah. So your separation from, I won't call it separation, I think in 2004 or 5 you moved away from Raj Comics? Yeah, right. Okay, and then Q2A and Q2A, these after Virgin that, and all Virgin, that. yeah. So till 2010 you were with Virgin Comics. Right. Okay, after that you came back here to Kerala? No, I'm still with them now. They have changed the name from whatever it is. Okay. I'm still with them. Because for the past 20 years, 19 years, I'm with Graphic India. Earlier it was Virgin Comics. Then it became. No, I'm talking about your base. I mean, after Delhi, when you left Raj Comics, you stayed back for maybe some more time and worked for Q2A. Q2A. And then you shifted west to Chennai. Yeah. Right. Right. In Chennai, I think you were there about Bangalore. Bangalore. Yeah. So Bangalore, you were there for about 2-3 years. 3.5 years. Okay. Yeah. And then after 2010, then while you stayed with the same publishing house, but you came back to Kerala, right? Your hometown. Yeah. Okay. So since then, I think 2010 you have been here. Yeah. Okay, lovely. So how have you seen this art industry evolve over all these decades? Well, the golden era, I would say, that was in 1990s. Yeah, no doubt. Yeah, 1990s. In every which way. 1990s was the golden era of Indian comics. But later on, nothing started weaning out because of the entry of these video games, digital stuff now. So foreign medias. So definitely. And the satellite TV also came in. Right. So and the reading habits also has changed. Yes. People are more inclined towards these digital stuff. So that's how I think the printed comics have started somewhat diminishing or so. That's the reason. Yeah. So talking of the digital, way of going about the artwork, do you still do it in the traditional way, or you have taken to you like? Yeah. Okay. I do the conventional way. Okay. Because I love it. I just cannot think of doing it in any other way. I mean, digital or something, because I don't personally. I don't enjoy it. That's okay. It's a completely a personal choice. It's a completely personal choice. Yeah. Okay. Otherwise, any thoughts on the digital medium? No, I have never thought of that because I'm not. Since I am not interested in it, I never go researching for it. Okay, great. And in terms of trends and any specific pattern that you have noticed that may have changed in all these years in the art industry, Indian art comics industry? It's a gradual evolution. Okay, it evolves, gradually. It's not all of a sudden something propping up like that. No, nothing like that. It evolves gradually. So we are on the move. We'll just catch up with whatever works at that time, and that's how things goes. Okay. Yeah. Okay, sir. I mean, going through your artwork, we were always amused by the level of research work that you that must have gone into the poses and the dynamic postures of the characters that you used to draw. So can you just take us through the process that you would follow while drawing a thing? For example, a script would come to you, and then just take us through from that point onwards. How would you go about your artwork? There isn't much to say about that because it's quite natural and usual. It's not uncommon. First, you get the script. I go through the script completely, read it, try to understand it, try to visualize it, the ambience and the characters, everything, and then
then do some collection of the references if necessary. Okay. At certain points we may need some references. Okay. तो वो भी हो जाता है बीच में, और फिर thumbnails बनता है. तो thumbnails is क्या कहते हैं, वो एक आइडिया देते हैं जो पब्लिशर है उनको कि ओके ठीक है ये चलेगा या नहीं, या फिर राइटर देख के बताएगा. तो क्वाइट ऑफन वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी डू सम थंबनेल्स, तो वो अप्रूव हो जाता है. तो नेक्स्ट स्टेज है फाइनल स्केचेस के लिए. बट जैसे आपने बताया कि ये फॉर्मेलिटी महज एक रहता था कि आपने कुछ रफ स्केचेस बनाए, कुछ पैनल्स बनाए और फिर राइटर को दिखाए. So was it to gain writers' approval or just to tell him that we are on the same page? आपके लिए ज़रूरी होता था क्या कि वो राइटर की सोच के हिसाब से होना चाहिए कि देखो मैंने सही पकड़ा है कैरेक्टर या नहीं? No, I have no doubt. Okay. जिस वक्त मैं वो थंबनेल बना रहा हूँ तो उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में जो मेरे सोच में आया बस बना दिया. लेकिन असली सोच तो बाद में चलता है. जो रियली मुझे वो जो फाइनल पेज स्केच करना होता है तो उस वक्त मैं सोचता ही रहता हूँ कि मैंने ये थंबनेल तो बना दिया, राइटर ने ओके कर दिया, एडिटर ने ओके कर दिया, ही इज खुश, ठीक है, तो उसका पार्ट तो ओके. लेकिन मैं सैटिस्फाइड नहीं, आई वांट टू गो बियॉन्ड दैट. ओके. तो आपका तो लिबर्टी रहती थी कि मैं उसको फर्दर कर सकता हूँ. यही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो लिबर्टी जो है ये लोग दे रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. And you have got this liberty from all of the publishers. All the publishers. Wherever I worked. Wherever you worked. Yeah. Coming back to Doga, sir, because Doga is like, a focal point for most of us kids who were born in the late 80s or 90s. What a character it was. What a character. Tell us about something about Doga, sir. उसमें जो angst दिखता था सिस्टम के अगेंस्ट में, एंड यू वुड बी ड्राइंग नॉट वन बट टू पर्सोनास. वन वाज दैट ऑफ सूरज, वेरी काइंड jovial person who is into bodybuilding and stay away from fighting. On the other hand, there is Doga, who once dons the costume, he becomes a different personality altogether. And his angst, his sense of justice and all. From where did you take those references? How come you made this character so believable? See, first of all, as I said earlier, you need to go deep into the character first. Understand it well, where it stands. What are the characteristics of the character? Okay, this is the most important thing. When you are sure with that, 100% sure with that, okay, you need to build on it. Okay. तो वो कैरेक्टर जो है उसको समझना बहुत जरूरी है. तो उसका जो रिबेलियस नेचर है डोगा का, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा मैं एसिमुलेट कर पाता हूँ चीज को, फील कर सकता हूँ. तो वो एंग्स्ट, वो जो रिबेलियन है, वो तो जो वो चीजें इसीलिए वो एक्सप्रेस होता है उस पे. आप रिलेट करते थे? मैं रिलेट कर सकता था. ऐसा नहीं है कि मैं दूर खड़ा हूँ कि हाँ यार ये कैरेक्टर इतना ब्रूटल है बस बना दो, वो नहीं. तो आई मूव विद द कैरेक्टर ना, तो इसलिए वो एक्सप्रेशन आ जाता है. मतलब उसकी ब्रूटैलिटी और मैडनेस के पीछे भी एक मेथड होता था. तो आप कुछ अपना अंश भी इसके अंदर डालते थे कि आपका भी जो पर्सनल कुछ है नाराजगी वगैरह? नहीं, जो डोगा जिस हद तक जाता था वो तो हम इमेजिन नहीं कर सकते. मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, मतलब वो तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है. लेकिन हाँ, फील द इमोशन. तो मेरे ख्याल से ना उसको फील करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके एसेंस को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं. कि जब तक हम उस कैरेक्टर को फील नहीं कर रहे हैं ना, तो यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली. So you need to आपका जो आपका पर्सनल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका, क्योंकि हर जो आर्टिस्ट होता है वो अपना भी एक अंश डालता है अपने आर्ट वर्क में, अपने कैरेक्टर्स में. तो आपने अपने अंदर का कुछ एंग्स्ट या फ्रस्ट्रेशन है जो सिस्टम के प्रति, कुछ वो सोच कर फिर उसके अंदर डाली, कुछ ऐसा आप भी फील करते थे उस टाइम पे? क्योंकि जो जहां तक डोगा का सवाल है वो तो एक्सट्रीम था. नहीं, वो एक्सट्रीम चीजें नहीं, बट बेसिक चीजें कि ये राइटियसनेस के लिए खड़ा रहेगा, जो गलत है वो गलत है, ये सिस्टम गलत कर रहा है, आवाज उठानी पड़ेगी, एंड थिंग्स लाइक दैट. हाँ, तो वो सोच तो है मेरे अंदर भी. ठीक है, जो गलत है वो सामने आ जाता है और मैं उसको नोटिस कर लेता हूँ. तो उस जो डिसलाइक है मुझे मेरे अंदर, तो वो तो है ही है. तो वो चीजें जो है पेज पर
एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है डोगा। ओके, तो यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इमोशंस मैं फील नहीं कर पाता। नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर के लिए उसका अपना एक इमोशन होता है, एक आइडिया होता है ना। तो उस चीज को इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि यू नीड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द कैरेक्टर यू डिस्प्ले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर बात उसको फील करके हैं, उसको डालते हैं। एक फेमिनाइन कैरेक्टर आप बना रहे हो, ओके, एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, आप एक डोगा को छोड़िए, ओके, वो तो हम जानते हैं कि वो इस तरह का है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो सिर्फ डोगा ही नहीं है, बाकी लोग भी तो हैं। तो वो बिल्कुल उस कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा, वो क्यों ऐसा है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे कि यार वो क्यों कह रहा है, ये डायलॉग क्यों ऐसा बोल रहा है, उसका सिचुएशन क्या है, वो किस बैकग्राउंड से है, इतने सारे डीप थॉट्स जब उसके पीछे जाएगा, उसी वक्त वो इसलिए आएगा, आउटपुट जो है ना वो इसलिए। आई लव यू नाम से भी एक कॉमिक बुक आई थी, आई लव यू, हाँ, उसमें कैसे आपने अपने इमोशंस डाले? नहीं क्या याद किया आपने कॉलेज के दिनों को, स्कूल के दिनों को? सी बाय गॉड्स ग्रेस जो है ना, मैं समझ पाता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब आई कैन रिलेट विद दैट ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज सेड। ओके, सो दैट्स द केस। जैसे एक्टर्स होते हैं इन सिनेमा, तो उसमें भी क्या है कि वो कैरेक्टर के डीप में जाते हैं, वो रियलिटी में वो ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो चीज फील करते हैं, उस चीज को फील करते हैं। यही प्रोसेस है मेरे कॉमिक बनाने के लिए, क्योंकि मैं जो भी कैरेक्टर को डील कर रहा हूँ तो मैं उसके इमोशंस को मैं फील कर रहा हूँ। तो इसीलिए शायद तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल है, खान से जिससे पॉसिबल है वो अच्छी तरह बनकर आएगा, आउटपुट अच्छा। आपका ड्राइंग स्टाइल आई मस्ट से सर बड़ा सिनेमैटिक होता था। जैसे मेरी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट 786 786, तो वो कूली करके मूवी आई थी, थोड़ा कुछ रेफरेंसेस उसमें हैं वैसे वाले। अच्छा, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, वो मैंने देखी। हाँ, बट बहुत गजब, मतलब उसके जो पैनल दर पैनल हैं बहुत अमेजिंग, मतलब और ऐसे ही आई एम श्योर बाकी और जो फैंस हैं उनके अपने अपने फेवरेट्स हैं, बट बहुत गजब तरीके से आप करते हो। एक सवाल सर यहीं पर, केरला से आप आते हो, दिल्ली में आप काम करते हो, डोगा की कर्म भूमि है मुंबई। आपने वो मुंबई या जो इथॉस है, जो लैंग्वेज है, उसको कैसे कैप्चर किया? क्योंकि हम जब पढ़ते थे वो, तो हमें लगता था कि जो कहानीकार हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है और जो चित्रकार हैं वो मुंबई के ही लोग हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को पकड़ के वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल सिनेरियो जिसे आप दिखाते हैं, बिल्कुल बैंग ऑन। कैसे सर आपने मुंबई का फील कैसे पकड़ा? उस टाइम पे तो इतने रेफरेंस पॉइंट भी ज्यादा नहीं थे, रेफरेंसेस बहुत कम होते थे उस वक्त, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया बहुत ही कम था, मतलब हमारे एक्सेसिबल तो है ही नहीं थे। तो फिर भी जो है एक नॉर्मल अवेयरनेस होता है, और फिर जो राइटर हैं तरुण कुमार वाई जी, जो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी, गजब बहुत अच्छी, बहुत ही डिटेल, दमदार डायलॉग है। हाँ, तो वो भी तो इंस्पायर करता है ना। तो definitely he is guiding us in a way, okay, inspiring us, so definitely we are in a position to imagine more and more strongly। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आर्टिस्ट ही सब कुछ इमेजिन कर, नो, ऐसा कुछ नहीं है। जो राइटर हैं वो भी सॉलिड थे, बहुत अच्छी तरह राइट करते थे, बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि मुंबई इज नॉट जस्ट अ सिटी इन डोगास कॉमिक्स, वो अपने आप में कैरेक्टर है। हाँ, तो वो बहुत सही उसमें कंटिन्यूटी साथ चलता है। ऐसा लगता है कि राइटर भी और जो हमारा आर्टिस्ट साहब हैं वो बिल्कुल अवेयर हैं कि हर फ्रेम में मुंबईया पना है, मुंबई अच्छा लग रहा है, कैरेक्टर झलक रहा है। तो ये चीज, तो इसीलिए कहा ना, राइटर भी स्ट्रॉन्ग थे, उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। डोगा का कैरेक्टर भी इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो एकदम डाउन टू अर्थ, बहुत बढ़िया मतलब कैरेक्टराइजेशन किया होता, तो वो राइटर को भी क्रेडिट मिलता है, मतलब फर्स्ट क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। बिल्कुल, तो उस चीज को मैंने कैरी ऑन किया बाय गॉड्स ग्रेस, तो ये बहुत अच्छी चीज निकली, इसलिए डोगा सुपर हिट। सर बाय नाउ आई नो दिस मच कि आप ज्यादा डिटैच्ड या तो मतलब ज्यादा अटैच नहीं होते हो आप अपने कैरेक्टर से, बनाए हुए कैरेक्टर से, लेकिन डोगा के बाद सबसे ज्यादा जो आपने कोई किसी कैरेक्टर को बनाया है मेरे ख्याल से वो परमाणु है। सो आपका पर्सनल फेवरेट है दोनों में से कोई? पर्सनल फेवरेट तो डोगा ही। यहाँ आप अपने आप को अलग नहीं रख पाए, बट डोगा आई थिंक हम, हाँ, गजब, क्योंकि वही अच्छा मुझे लगता है ज्यादा। हाँ,
गजब सर, गजब गजब। ओके, सो बट सर परमाणु भी आपने गजब बनाया, और हनीफ अजहर जी के लेखन में काफ़ी सीरीज ऐसी रही जो मैंने सिर्फ आप दोनों के लिए पढ़ी है, क्योंकि उनकी लेखनी भी वहाँ ठीक अच्छी रही, और आपने उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया आप दोनों ने एक दूसरे को। बहुत ही गजब आप लोग की जुगलबंदी रही। ओके, तो सर आज के दौर में जो यंगस्टर्स हैं, और यहाँ यंगस्टर्स से पहले मैं आपसे आपकी एज बता सकते हैं कैमरे पे? हाँ श्योर। हाँ बताइए सर, मुझे नहीं पता। आई एम 58. 58. I'll be 58 by next month. And tell them sir that you are not a myth. जी मैं मिथ नहीं हूँ, बिल्कुल। I exist for real. धीरेन्द्र जी मेरे सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, मैं पिंच करे आ रहा हूँ, बट it's not working out. It's a dream come true. Okay, coming back to this thing. Sorry for the digression, sir. So मैंने एज आपकी बस इसलिए पूछी क्योंकि एक थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। You are a seasoned, artist. मैं पूछ रहा था कि जो यंगस्टर्स हैं who are just starting out, उनको आप क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे? कैसे they should, what kind of attitude they should have, और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर उन्हें कुछ करना है इसी स्पेस में? क्योंकि मैं अपने व्यू पॉइंट से ही बता पाऊंगा, जनरल चीज मैं नहीं बता पाऊंगा। द मेन थिंग इज पैशन, ओके, एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ होल हार्टेड एफर्ट ऑन योर पार्ट। पैशन विदाउट एफर्ट एंड प्रैक्टिस डजंट वर्क। सी, इफ यू हैव पैशन, you need it supported by your effort and practice. Right. So without practice and effort, you can never think of a result. Okay. तो मेरे लाइफ में तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि पैशन है, तो खाली पैशन नहीं था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फुल एफर्ट, जो जो चीजें आपको समझना है, जो जो चीजें आपको इम्प्रूव करना है, वो कॉन्स्टेंटली करते रहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बताया तब जाके आप करोगे। नो, डोंट वेट फॉर अदर्स कमेंट्स, एनालाइज योरसेल्फ एंड try to bring the correction yourself. Right. Okay, that's how you evolve yourself. Okay. See, don't wait for others to comment on you. Comment on yourself, you yourself. It's your life, lead it your way. Because you have a goal, then you are the one who needs to try for it. सर आपसे जो शुरुआत में थोड़ा बात हुई थी कहीं पे, जहाँ पे आपने बताया कि आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, सेल्फ लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया आपने। मैं आजकल जैसे कॉमिक्स बिरादरी में, जो कम्युनिटी में मिलना जुलना होता है, तो काफ़ी यंगस्टर से मिलता हूँ जो एज एन आर्टिस्ट करियर परसू कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि उनमें एक ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। वो 3 साल का कोर्स कर लेंगे या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेंगे फाइन आर्ट्स में, लेकिन उसके बाद उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो उनको अगर शुरू के 6 महीने में या 8 साल भर में कुछ नहीं मिली सफलता, तो वो अपना फील्ड चेंज कर देते हैं। तो और उनमें से कुछ लोग प्रॉमिसिंग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स अ साइन ऑफ चेंजिंग टाइम्स। आजकल लोग ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं कि इन्वेस्टमेंट इतना हो गया है तो उसका रिटर्न कितना होगा या नहीं होगा। तो इस पर आप मतलब क्या कहेंगे सर? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस तरह से नहीं सोचता था अपने टाइम में। हाँ, क्योंकि उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि कंपैरेटिवली दे वर मोर सक्सेसफुल देन मी इन टर्म्स ऑफ मनी और वर्क दे गॉट। ओके, तो ऐसा था उस टाइम भी था, उस वक्त भी थे, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं था कभी भी। मतलब से अफेक्टेड भी नहीं होते थे? ना 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 ना, बिल्कुल भी कभी माइंड में आई नेवर थॉट ऑफ दैट monetary side and whatever things associated with that. Okay, I always thought of my work. तो ये एक पैशन है, इसीलिए मैं पैशन हमेशा कहता हूँ कि तब भी मैं यही सोचता था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं जो मैं अभी कर रहा हूँ, आई नीड टू ग्रो। तो वो चीज़, वो इंटेंसिटी तो अभी भी है। अभी भी मैं आर्टवर्क्स, डिफरेंट आर्टवर्क्स देखता हूँ, तो वो इंस्पिरेशन है। ऐसा नहीं है कि किसी फलाना आर्टिस्ट का देख लिया तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट हो, नोवाइस, इवन इफ ही इज अ नोवाइस, आई एम रेडी टू अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट इट। ओके, क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करता है, हेल्प्स मी टू ग्रो। तो ये चीज़ है, अभी भी मैं ऐसा ही करता हूँ। अभी भी
क्योंकि अभी भी मैं कंपेयर करता हूँ अपने आर्ट वर्क को और जो बेहतरीन आर्ट वर्क्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे कंपेयर करता हूँ और मैं जज करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन मी, व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू इम्प्रूव। तो ये चीज़ें तो अभी भी चलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो पैशन है। क्योंकि मॉनेटरी ऑफ कोर्स मनी मैटर्स, मनी चाहिए। आप इतना एफर्ट इसमें लगा रहे हो, इतना टाइम इसमें खर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू नीड मनी। तो जिस चीज़ से आप बिजनेस करोगे और मुनाफा कमाओगे, उसका एक हिस्सा तो आर्टिस्ट को मिलना ही चाहिए। दैट्स ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग फॉर दैट। नो, नेवर, आई वोंट डू दैट। क्योंकि मैंने ऐसे किया है। क्योंकि इन द बिगिनिंग ना, there were a lot of artists who were earning much better than me at that time. But I never thought of that because I was always concerned about the quality of my work. Otherwise you would have digressed. भटक जाते आप। हाँ, भटक जाता मैं। बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त में भटकने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि I was always focusing on my art. ठीक है। तो उसको किस तरह से बेहतरीन बनाना है, तो बेहतरीन अभी भी नहीं बना। मैं यूं ही कहूँ सर, वो प्लीज लीव दैट टू अस टू डिसाइड। और भी बेहतर बन सकता है। ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर दैट, आई एम लुकिंग फॉर मोर इम्प्रूवमेंट। तो ये चीज है। ठीक है। तो शुरू में भी मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ कि यार पैसा जरूर है, डेफिनेटली मनी, यू नीड मनी टू लिव। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे के लिए आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दो, आपके टैलेंट को कॉम्प्रोमाइज कर दो। नो, डोंट डू दैट। फर्स्ट यू बिकम समथिंग, ओके, डू समथिंग एंड देन यू डिमांड फॉर योर मनी। तो वो चीज होता है ना। तो आप अपने आप को एस्टैब्लिश करो पहले अपने आर्ट में, अपने स्किल में। फिर आपको बैक करने की जरूरत नहीं है, बार्गेन करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल कम इट्स ओन। राइट। Okay, just wait for the right time and everything will, आ जाएगा, अपने आप ही आएगा। यही फंडा रहा मेरा हमेशा। सर, आपके शुरुआती दिनों में ना बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के और आप इतना मतलब फोकस से आपको कैसे मतलब डायरेक्शन मिली कि मुझे कहाँ जाना चाहिए काम मांगने के लिए? और क्योंकि उस टाइम इतना सोशल मीडिया तो कुछ था नहीं। खैर, सोशल मीडिया पर तो आप आज की डेट में भी नहीं हो। नहीं। बट उस टाइम कैसे ढूंढते थे कि मुझे कहाँ, क्या क्या पब्लिकेशंस हैं, कहाँ काम मिल सकता है? बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस उस वक्त भी नहीं थे, लेकिन जितने थे वी वर अवेयर ऑफ दैट। पता था कि ये लोग वहाँ हैं। अच्छा। तो इसलिए देखा है, बुक स्टॉल्स में बुक्स देखे, तो वी आर फैमिलियर विद द पब्लिशर्स। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, ये लोग सब दिल्ली में ही हैं, तो मैं सबके चक्कर लगाऊंगा। तो आप इनके ऑफिस जाते थे? हाँ, ऑफिस गया था मैं। गोयल के पास भी उनके जो कयास्क है था, मतलब चावड़ी बाजार में, दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट था उनके चावड़ी बाजार। वो मतलब वो मार्केट था ना, वो जो छोटे छोटे कयास्क है, उसमें से एक कयास्क इनका था, गोयल कॉमिक्स का। तो उनके पास भी मैं गया, एक दो पेज बना के, सैम्पल्स पेजेस बना के। तो उन्होंने देखा, बस वो खुश हो गए, बढ़िया, आ जाओ, कर लिया। इस तरह। सर, एक बात बताइए, हम लोग ही चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सही तरीका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है कि आपको काम चाहिए, उसके पास काम है या नहीं, जो भी है उधर जाओ, अपने आप को प्रसन्न करो ना, बस अपना काम का पोर्टफोलियो जो बनाया है वो दिखाओ, बस। मिलेगा नहीं, कहीं और मिलेगा, वो अलग बात है। हाँ, नहीं, काम तो तब मिलेगा ना जब आप उनके स्टैंडर्ड में हो, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज आप, इफ यू कैन डिलीवर दैट काइंड ऑफ थिंग, यू विल डेफिनेटली गेट वर्क। नहीं, ये तो ऑफ कोर्स ये तो फुल हार्डीनेस हो गई कि एक उनका सर्टेन स्टैंडर्ड है और आपका बिल्कुल ही नीचे है। हाँ, तो आप अपना काम लेके जा रहे हो। हाँ, तो वो वाली बात है। हाँ, तब ये प्रॉब्लम है ना। हाँ, कि जो पब्लिशर्स हैं, दे आर देयर टू मेक मनी। ओके, दे आर नॉट डूइंग इन सोशल वर्क। कोई चैरिटी नहीं, चैरिटी वर्क नहीं कर रहे हैं ना, कि आप बच्चे हो इसलिए आप ठीक है हम ले लेंगे। नो, ये काम नहीं चलेगा ना। तो उनके काम आना चाहिए, हमारा काम जो है उनके काम आना चाहिए, तभी तो वो काम देंगे। अब मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि राज कॉमिक्स में गया था, तो आई वॉज नॉट 100% श्योर कि मेरे को 100% कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि बिकॉज वो वहां पे जो लोग थे ऑलरेडी जो काम कर रहे, प्रताप मलिक, दिलीप कदम जी, ये ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही बड़े लोग हैं। उस वक्त मेरे सामने तो वही थे, ग्रेट आर्टिस्ट है ना वो। तो वो लोग काम कर रहे हैं राज कॉमिक्स के लिए। तो उस वक्त मैं एक छोटा सा लड़का, पता नहीं कहाँ से, कोई अता पता नहीं, बस 2 पोर्टफोलियो के 2 ये चीजें सैंपल पेजेस लेके जा रहे हो। तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट राजकुमार जी ने उन्होंने कहा, दिखाया एक मतलब प्रताप मलिक जी का बनाया हुआ एक नागराज का स्टिकर था, तो वो दिखाया,
तो वो दिखाकर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दिस। तो मैंने उन्हें ऑन द स्पॉट ऐसे ही बात करके मैंने कहा सर मैं इसकी एनाटॉमी खराब है, प्रताप मलिक को बनाया हुआ स्टिकर, तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी एनाटॉमी खराब है, राइट नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर आप बनाओ। हाँ। मैंने कहा ठीक है मैं बनाता हूँ। अब मैंने एक पोज बनाया नागराज का, दिखाया। अच्छा। बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए। तभी उन्होंने कहा ओके आप संजय जी से मिलना जाके, तो वो आपको काम देंगे। पर सर वेरी नाइस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। पर उस टाइम के मेंटर्स जो होते थे ना, हाँ। उनमें और आज के मेंटर्स में जमीन आसमान का फर्क भी है। आई मीन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जैसा ये आपने सपोज आज की डेट में किया होता कि मैं इसको बेटर बना सकता हूँ, मतलब जब बना के लेके आओ, द मोमेंट यू वॉकड आउट ऑफ द डोर बोलेंगे ये लड़का कौन था? नहीं, इसको अभी से बाहर कर, अभी से बाहर करो, कल से अंदर नहीं आना चाहिए। एक्चुअली वीरेंद्र मुझे पता भी नहीं कि ये किसने बनाया है, क्योंकि इतना बड़ा वो नहीं हुआ ना, ऑब्जर्वर नहीं हुआ ना मैं, तो मुझे पता भी नहीं है कि ये प्रताप जी ने बनाया है। हाँ। एक स्टिक का डिजाइन दिखाया, मैंने कहा इसके एनाटॉमी का तो फिर आप बनाइए। सर आपका जो ये शुरुआती दौर था ना, मान लो आपको काम मिलना भी शुरू हो गया था, ये होता, आपके कौन कुछ कोई इंस्पायरिंग फिगर थे जिनको आप देखा करते थे कि मैं ऐसा नहीं भी बनूं तो इस लेवल का काम करना है या और बेहतर करना है कुछ? मैंने ये अनुपम जी का जो ध्रुव वाला बुक है ना, कि ध्रुव के कॉमिक्स, हाँ शुरुआती, हाँ शुरुआत में जब मैं पहली बार जब मैं राज कॉमिक्स ज्वाइन करने गया तो ध्रुव देख के बहुत अच्छा लगता है, इतना बहुत ज्यादा डिटेल्ड, बहुत कुछ भी मुझे बना रखा है ना, बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो शुरू तो मैंने वैसे ही किया था कि ये सोच कर कि इनके लेवल का तो एटलीस्ट बनना चाहिए अनुपम जी, ठीक है। तो जैसे मैंने काम शुरू किया, मैंने कहा तो क्या कहते हैं, संजय जी ने मुझे ये बंच ऑफ कॉमिक्स दिए, तो शायद उनको लगा होगा कि ये थोड़ा सा और ज्यादा पिकअप कर सकता है, तो इन्होंने ये कॉमिक्स दिए मुझे, वेस्टर्न कॉमिक्स, अमेरिकन कॉमिक्स। तब ब्लोन अवे पाया कि यार ये क्या चीज़ है यार, तो ये सब अलग रखो, पहले ये देखो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तब मुझे लगा रियली अब तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, इस लेवल तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसके लिए डू सेल्फ स्टडीज, गोइंग थ्रू ऑल द मटेरियल्स यू हैव, टू व्हाट इज दिस, हाउ डज इट कम आउट, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हो, ये ऐसे क्या है, एनाटॉमी आई नेवर लर्नड इट एनीवेयर, ओके, बट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस वेस्टर्न कॉमिक्स, अमेरिकन कॉमिक्स, आई लर्नड इट by God's grace, by observing, looking at them, just by observing, not even practicing. I never practiced anatomy, but yeah, I'll take care of it when I'm doing the real page, the final page, okay, but that is in my mind, my thought process. So beyond Anupam sir and the American comics which you would use as reference points, was there anyone else, any other figure in the art industry that you would look up to? So initially it was Frank Frazetta paintings, okay, were fascinating because of the anatomy, the design he does. Then the comic people, as for comic people, Neil Adams was the first inspiration. Okay. Jack Kirby, John Buscema, and then came Mark Silvestri and David Finch. I love them both, okay, because the way they treat the artwork, no? Oh man, amazing strokes, everything. So everyone inspires me. Not only these people, there are many. तभी शायद आई थिंक, मतलब आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये कहा है सही कहा है कि यू शुड फाइंड द राइट हीरोज। उसके बाद भी तुम्हारा काम तभी अच्छा होगा। वो भी आप ना, आप देखोगे, आप मिलोगे ऐसे, मतलब इंस्पिरेशन जो है ना वो आप खुद ही पाओगे, अपने आप ही आप फॉलो करोगे, क्योंकि वो यू फाइंड कंफर्टेबल डूइंग एंड कन्विंसिंग, जस्ट नॉट कंफर्टेबल योरसेल्फ बट कन्विंसिंग, देन यू विल फाइंड द राइट हीरो। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना सर, आपने अनुपम सर के बारे में बताया एज एन यू नो इंस्पिरेशनल फिगर। हाँ, पहला स्पार्क जो है ना इतना डिटेल है नहीं, और जैसे उनका जो ध्रुव का किरदार है, हाँ, वो ऐसा फेमस हुआ, बिल्कुल एकदम राइटियस है और हीरो है, जैसे हीरो होते हैं, ठीक है। आपको बनाया जो एंटी हीरो किरदार था डोगा,
became as much famous, if not more. तो आपने अपने एक अलग स्ट्रीम में आके भी कैसे पॉपुलर हुए आप लोगों के कैरेक्टर्स जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है? क्योंकि ये जो है वो मैंने हमेशा मैं कह रहा हूँ कि my focus is always on my work, okay, not on the character. Okay, whatever I'm doing, and that should be the maximum as far as I'm concerned. Okay, that's my goal always, even now. Okay, I'm not basing it on any particular character or things like that. Okay, when it comes to Doga, I'm more familiar and easy to simulate with the character, so that it comes out more intense. That's the only thing. So my next question to you would be your name. Okay. Many of us, I mean, until very recently, when I would not know that your actual name is Edison George A. Manu, I suppose, is your pen name. Pen name. And when did this development take place? When did you assume this name, pen name, Manu? Manu name I took up when I started working with Raj Comics. Raj Comics. Raj Comics. Right from the first project. Yeah, not from the first project. I think after a couple of projects, I think Underworld has your initials. Original name, yeah. Initials of your original name. Yeah. It was Edison, I think. So I think it was only with Doga Comics. Doga time, I think. With Doga or something, I started using. So Goel Comics and Pawan Comics, they also have EGA. I used to use EGA. Edison George A. Initials. Yeah. Okay. Because now I felt that my name is not so familiar with the readers in the north, so I thought that my name should be more easily relatable, short one, catchy. Catchy. Okay, that's why I took up that name. That's all. Okay, sir. I mean, I've interviewed you today. I mean, after a very long wait, but very worthwhile at that. I really thank you from the core of my heart for that. On a parting note, two things. One piece of advice. I want you as in the seasoned 58-year-old artist Manu. If you have this power to go back in time and you meet your younger self, say 17, 18 or a 19-year-old Manu, who's out there looking out for work and wants to make a name for himself in the field of art. So what piece of advice would you give to your younger self? First of all, I would say that never think of fame and money at that stage. Think about only your talent, your craft, and try to polish it out. That's the best thing. Okay, don't think about money and popularity, fame, or things like that. Okay, only focus on your talent and bring out your best in your craft. That's it. Okay. Yeah, that's the only thing I have to say. But even back then, you were very clear in your head. Yeah, it's always clear. Okay. Because now there is no purpose in moving forward with doubts, But you must have felt doubtful at any stage. No, not at all. Not at all. Not at all. Because I knew that it's the evolving stage. Okay, not that all of a sudden I'm becoming a star or something like that. No, I had never hoped of that, never dreamt of that, because I believe in the gradual development. Okay. Okay, fine. I mean, I get your point, and forget about your younger self. Let's not go there. Okay. Rather, give. I mean, anything that you want to say to our audience, thousands of Doga fans, Manu fans out there who are watching you right now. Any anything that you would want to say to them? Well, I'm happy that you all loved my Doga. Okay, आपने मेरा Doga पसंद किया और अभी भी आप लोग पसंद कर रहे हैं. बहुत खुश हूँ. कुछ आप भी करिए इसी तरह के काम. आप भी come out with the best in you, and for that keep your passion backed up by your efforts. That's the only thing I can say. Okay. On this note, I would like to extend my sincere thanks to you, sir. Thank you. Thank you for giving us time. I mean, what seemed like an elusive interview finally has happened today, and I'm so glad that you agreed to my constant request. Yeah.
Okay. Wonderful, wonderful time. I too am happy that you are here and we were able to meet. No, Thank you. Kerala somehow has this quality about it, about this city. Every time I visit here, Yeah. I go back with tons of memories, and this time is no different. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. Thank you.